हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है और स्प्रिंग बूट क्या होता है और उसके क्या बेनिफिट्स है, इन सारी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। When we use Spring Framework, we want to take care about all the configuration ourselves. But when we use a Spring Boot, that time it's every work like dispatcher servlet, view resolver, configuration, it's doing automatically. So when we use Spring Boot, that easier than Spring. So it's the advanced technology when we use Spring Boot. Also they have a benefits like flexibility because we use a automatically configuration, so all configuration included automatically, and dependency injection also included automatically. So all things is included automatically in Spring Boot. Also it's have a embedded servlet like as a Tomcat. It's used automatically included in Spring Boot. So all things included in Spring Boot. That's why so earlier use Spring Boot, and that there have so many benefits. That's why we use Spring Boot. How it's work I show in my laptop. So please watch this video at the end. If you watch this video, if you like this video, please like and share it and subscribe my channel. Thank you so much. All the best. So discuss about Spring and Spring Boot. So firstly we discuss about Spring framework. Spring is one of the most widely used Java framework. Spring framework core concept are dependency injection and aspect oriented programming. Spring framework can be used in normal Java application also to achieve loose coupling between different components by implementing dependency injection, and we can perform cross-cutting tasks such as logging and authentication using Spring support for aspect-oriented programming. I like Spring because it provides a lot of features and different modules for specific tasks such as Spring MVC and Spring JDBC. Since it's an open source framework with a lot of online resources and active community members, working with Spring Framework is easy and fun at same time. When we use Spring Framework, the easy work with Spring MVC and Spring JDBC. That time most of the peoples use Spring Framework. Otherwise, we new technology use as a Spring Boot. We discuss about that. So discuss about Spring Boot. What is Spring Boot? Spring Boot provide a good platform for Java developers to develop a standalone and production grade Spring application that you can just run. You can get started with minimum configuration without the need for an entire Spring configuration setup. Spring Boot offered the following advantages to its develop easy to understand and develop Spring applications, increase productivity, reduce the development time. So, how can work Spring and Spring Boot, and what is difference between Spring and Spring Boot? We discussed on the this video. So I share my Eclipse. So I doing a code and
show you what is the difference between Spring and Spring Boot. So let's start the practice about coding. let's start करते हैं हमारा डिस्कशन about difference between Spring and Spring Boot. So first of all, I show you Spring form.xml फाइल. यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल वर्जन दिया हुआ है, ग्रुप आईडी दिया हुआ है, आर्टिफैक्ट आईडी दिया हुआ है. इसके अलावा और भी कुछ प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन या कोई डिपेंडेंसी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं की हुई है. जैसे कि हम जब स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन नाम का स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें जो pom.xml फाइल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंक्लूडेड हुई है और यहाँ पे डिपेंडेंसी भी इंक्लूडेड हुई है. जैसे कि स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब टूल्स और हमारे डेटाबेस के लिए माइस्क्यूएल कनेक्टर और माइस्क्यूएल कनेक्टर जावा भी इंक्लूडेड किया हुआ है और उसके वर्जन भी यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं. ये सब pom.xml फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं. तो इस तरह से स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में डिफरेंस है. और इस स्प्रिंग बूट में एप्लीकेशन प्रॉपर्टी नाम की फाइल होती है जहाँ पे डेटा सोर्स हाइबरनेट प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट की जाती है, जिसके थ्रू हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर पाते हैं और उसके थ्रू हम डेटा को अचीव करते हैं. तो एप्लीकेशन प्रॉपर्टी के लिए उस डेटाबेस सोर्स का हमारा यूजर नेम, पासवर्ड, ड्राइवर क्लास, जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में या एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में इंक्लूड होती है. ये जो स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट होता है उसमें जो स्टार्टर होता है उसको रन करने के लिए जब हम यहाँ से अगर रन करें इस प्रोजेक्ट को, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस प्रोजेक्ट को अपडेट कर लेती हूँ. अपडेट करने के बाद यहाँ पे जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो हमारा टॉमकैट सर्वर है वो रन होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टॉमकैट हमारा स्टार्ट हुआ है, पोर्ट नंबर भी यहाँ पे दिया जाता है, टाइमिंग और इस स्टार्टर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंक्लूडेड है. तो इस तरह से स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में डिफरेंस होता है. यहाँ पे जो हम @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है जो हमारे नोटेशन लगा हुआ है यहाँ पे, ये स्टार्टर फाइल के लिए इम्पोर्टेंट होता है. तो स्प्रिंग बूट में डिफरेंस है और ये ऑटोमेटिकली सर्वर पर रन होता है. तो जो हमारा मैन्युअली एफर्ट है वो कम हो जाता है स्प्रिंग बूट के यूज से. तो इस तरह से स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में डिफरेंस है.